एंड में जो स्टोरी को इन्होंने भाई घुमाया है, दैट्स क्रेजी। चंद्र पे तो गुस्सा आएगा ही आएगा आपको कभी ना कभी। whatever has happened with her life, she never expected that to happen. Where actually humans find themselves when they cannot see any ray of hope. Or the moment when I was reading this, I knew कि भाई आज सुधा के चरणों पर अपने जीवन के सारे गुनाहों को चढ़ाकर हमेशा के लिए क्षमा मांग लूंगा, लेकिन मेरी सांसों की सांस सुधा मुझे क्षमा कर देगी ना। Hello everyone, it's me Kanishka Singh. Welcome back to my YouTube channel. This video is dedicated to गुनाहों का देवता। तो ये बुक मैंने recently read करी। गुनाहों का देवता is written by धर्मवीर भारती जी. So guys, I would also like to say that I'm not any professional reviewer or any literature expert or something like that. I just read books and whatever I love about them or whatever I don't like about them, certain characters, certain scenes or anything, I just come here and मैं उसको बता देती हूँ. So I just don't know the particular flow or the particular way in which a person reviews things. I just take the book, I just tell gist of the story, what happens in this, and the lines which I underline and which I found very interesting. So I just come here and share them. So this is what you can expect from my review videos. So please don't come with whole expectations that I would just give you a mind-blowing review. But I have 100% believe that whatever I say, it's somewhere or somehow the mind-blowiest. ये कोई इंग्लिश का शब्द नहीं बनता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, बट या जो भी मैं करती हूँ वो माइंड ब्लोइंग तो होता ही है. चलो आगे बढ़ते हैं, इसी नार्सिसिस्ट थॉट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो द नेक्स्ट थिंग विच आई अंडरलाइन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, एज यू कैन सी आई यूज माई स्केच पेन्स टू डू दिस. पहले मैं नहीं करती थी अंडरलाइन वगैरह, बट नाउ आई डू इट बिकॉज वेन एवर आई ओपन द बुक अगेन, मुझे अगर ये पूरी खाली मिलेगी तो मुझे बस वो कहानी अपने दिमाग में याद है. आई वुड नॉट रिमेंबर द पर्टिकुलर इंस्टेंसेज विच आई लाइक्ड, सो दैट्स वाई आई डू इट. ओके, तो इस पर्टिकुलर बुक की आखिरी की जो कुछ पेजेस हैं उनमें मैंने बहुत ज़्यादा अंडरलाइन किया है एज़ कम्पेयर टू द स्टार्टिंग वंस, क्योंकि एंड में जो स्टोरी को इन्होंने भाई घुमाया है, दैट्स क्रेजी. बट ऑल्दो आई न्यू कि व्हाट्स गोना हैपन, कि एंड में क्या ही होना है. बट या द लास्ट सीन्स आर सो इमोशनल एंड सो लाइक कि आपके दिमाग में कॉन्स्टेंट क्वेश्चन रहता है कि चंदर stop it, why don't you realize things? And but there are some instances, there are some point in the story where you realize that it's not even Chandar who is at fault. Like Chandar पे तो गुस्सा आएगा ही आएगा आपको कभी ना कभी. You in the starting or somewhere in the midway you may also consider him as the villain of the story. And सुधा पे आपको बहुत ज़्यादा तरस आएगा, कभी कभी आपको स्टार्टिंग के टाइम पे उस पर बहुत वो आएगा कि गर्ल आप क्या कर रहे हैं, यू नॉट नोइंग, यू आर जस्ट कम्प्लीटली, यू हैव सरेंडर्ड योर सेल्फ. सो आप किसी की पर्टिकुलर सपोर्ट नहीं ले पा रहे हैं, बट एट द एंड यू विल टेक सुधा सपोर्ट बिकॉज शी इज़ लाइक उसका जो शी इज़ कम्प्लीटली she has just completely surrendered herself to the god. And there's this scene जिसमें कि when Sudha comes back to her Maika or to her father's house, so she just says Chandra gets to know that वो बहुत ही ज़्यादा पूजा और भक्ति वगैरह में she's getting indulged. So that also shows that whatever has happened with her life, she never expected that to happen. All she dreamed of was that she would just lie down in the grasses with her best friend Gesu, and then suddenly out of nowhere, all the marriage, then all everything which Chandra was doing. Even after marriage, she was like ki theek hai, okay, we'll figure this out or whatever. She was into more of worship love. So she was like, okay, if I'm not even physically present with him, I'm mentally his. So all that thing was happening. But then how Chandra stopped writing letters to her, and he started ignoring her, and he said that and he also asked her never to again write letters to him. So all that just made her go so much in pain, and all that just mentally
tortured her to that point that she started doing all those religious and all those spiritual things. And that's where she found her solace, that's where she found her peace, I feel. Because उन particular dialogues में when she is telling her how, when she's telling him, if you will see in all those, in that particular scene where she's explaining Chandar ki, you know, how she started doing all the fast, all the, because she was like completely, she knew that there is nothing good that's gonna happen, and all she can do is she can just stay where she is and just surrender herself to the god, क्योंकि भाई उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था. And that's where actually humans find themselves when they cannot see any ray of hope or any option or anything just in their way, so that's where they just end themselves up. Then the other scene which I really really got engaged into and which I really loved was the ending scene, कि जिसमें कि Chandra was like that now he realized everything and like that he is nothing without Sudha. Then he decides कि he'll go and then वो उसको apologize करेगा, he'll ask for sorry और वो क्षमा मांगेगा उससे and he'll sort everything out. But then the moment when I was reading this I knew कि भाई सबसे पहले तो it's ये बुक जब जहाँ पर भी मैंने रिकमेंडेशन पढ़ी है, जिस जहाँ पर भी मैंने देखी थी कि पीपल वर रिकमेंडिंग इट, दे वर नॉट इन अ हैप्पी मूड डेफिनेटली. तो आई न्यू कि इसकी तो एंडिंग क्रेजी होने ही वाली है, लाइक इट्स गोना बी अ सैड एंडिंग फॉर श्योर, आई न्यू इट समवेयर. सो at this moment I was knowing it because I watch a lot of cinema and I knew it that कि भाई नहीं कुछ तो होने वाला है, कि जो अगर ये इतना पॉजिटिव थॉट जो ये लेके चल रहा है कि all that he did, all that he created the mess or all that fuss which he created for even himself, कि उसका वो अब जाके सॉरी मांग लेगा and everything is gonna turn out right. No, that's not gonna happen. धर्मवीर भारती जी is not gonna let that happen. So तो हिज लाइन्स वर कि आज सुधा के चरणों पर अपने जीवन के सारे गुनाहों को चढ़ाकर हमेशा के लिए क्षमा मांग लूंगा, लेकिन मेरी सांसों की सांस सुधा मुझे क्षमा कर देगी ना.